And give them a huge round of applause. Azadi Ke Rang, a bouquet of 18 unique films by the film division on the freedom struggle and important historic moments to mark India at 75. With this, we just request our guests to follow, please coming together for a lovely photograph to get this memory in place. Ladies and gentlemen, let the claps continue. Thank you so much. Ladies and gentlemen, first we just request our guests of honor to head towards the auditorium. We just request you to please be seated for the time being. Let them have the liberty and access to head at their peaceful time. Once they have been seated, we request our members of press also to shortly join us. But just allow us a moment to just be seated for the time being. I'll let you know once you can step in towards the auditorium. Thank you. Members of the press, you can now proceed towards auditorium number 1. चलो 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 अंदर जाओ। जैकी जी आए। अभिषेक हाँ जैकी Applause. Somebody who definitely deserves a standing ovation, I must say. Let's all stand for Mr. Subhash Ghai ji, the showman of Indian cinema, who's given us a treasure trove of movies like Karma, Pardes, Ram Lakhan and many more. And the evergreens sing us the song that resonates in our hearts even today. Har karam apna karenge, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए. Thank you so much, Mr. Subhash. 6 and many more. He's had the unique ability to make films that churn the minds and hearts of today's youth and create an impact that even the younger filmmakers would struggle to create. Come on, let's give him a huge round of applause and let the standing ovations continue, ladies and gentlemen. These are our veterans, somebody who have defined our Indian cinema. We look up to all of them. Next one, of course, our charming Miss Divya Dutta ji, with films like BHAAG, MILKHA BHAAG, Delhi 6, Stanley Ka Dabba. Let's give her a huge, huge round of applause and many more to her credit. She's looking absolutely spectacular and resonating with her
positive personality. Let's give her a huge, huge round of applause. Of course, popularly known as Jagu Dada. Yes, Mr. Jackie Shroff, who absolutely needs no introduction, but somebody who has created unparalleled work across his volume of the years he's been in the Indian cinema. Somebody whom every actor in the industry looks forward to meeting, interacting, and all the members of the press. Somebody who's loved, and you can see how we all clap for him, and I think that's what shows the kind of work he's done. Of course, Mr. Shabir Boxwala, who's the co-producer of Shersha, Gupt, Mohara, and many more. Let's give him a huge round of applause. Thank you, Mr. Boxwala, for joining us. It's an absolute honor to have you today with us. Come on, ladies and gentlemen, let the applause continue. And of course, Mr. Sandeep Srivastava, the highly acclaimed screenwriter, lyricist, and actor, widely known for his film New York, and he also wrote the screenplay for the film Shersha. Let's give him a huge, huge round of applause. Thank you, Mr. Srivastava, for joining us on this grand occasion. With this, I'd request all our dignitaries to please be seated, and of course, our members of press, thank you so much. Thank you for the acknowledgement. Well, ladies and gentlemen, we usually look at cinema as a medium of entertainment, if you all would agree. But in reality, cinema is not only, it's not just what it gives the slice of our lives, but also the force that drives how we live our lives. If you may agree, we all, to some extent, are driven by what we see, and that is our cinema. Films that we watch, invoke all kinds of emotion in us. And of course, patriotism and the love for the motherland is one of the strongest of them all. Our eyes swell up, our hearts melt, and our chests soar with pride. But what does it take for a filmmaker to create this sentiment of patriotism on screen and make the audience connect with it? To this and much more conversations, I'm going to take the liberty of asking our distinguished guests certain questions which will help us to understand their perspective a little better. Are you all up for it? A big yes? Let's go ahead. So ladies and gentlemen, of course, we'd like to start by asking the question to none other than Subhash Ghai ji. सर वो एक क्या चीज़ है जो फिल्म देखने वालों में देशभक्ति का जलजला उठा देती है? If you can let us know, of course, Karma, such a fabulous film it's been. We'd just like to know, how does a film invoke the sentiment of patriotism? First of all, good morning, and thank you very much for inviting us and for this honor. Thank you, Ms. Marcus, everyone. You see, cinema has that magic which can connect to the audience, all its soul, heart, mind, thoughts, feeling. But it can evoke audience only when it touches you as a filmmaker. लिखने वाला जो राइटर है, पहले उसे देशभक्ति के बारे में फील करना चाहिए, फील होना चाहिए. फिर डायरेक्टर को उसके बारे में उतना ही महसूस होना चाहिए. जब जितना वो महसूस फिल्म बनाते हुए करेगा, उतना ही महसूस ऑडियंस फील करेगी. अगर मैंने ही आर्टिफिशियल तरीके से उसको ज्योमेट्री समझ के या मैथमेटिक्स समझ के या एक सुपर हिट बॉक्स ऑफिस समझ के किया कि पेट्रियटिज्म बिकता है, तो ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू फील इट फ्रॉम योर ओन सोल, विद इन योर ओन माइंड, लव फॉर योर कंट्री एंड फील फॉर योर नेशन. ये स्वभाव में होता है आपके, या होता है या नहीं होता है. उसको आप इनकैश करने के लिए नहीं करते. मुझे याद है कि जब कर्मा की फिल्म में बना रहा था और स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो इट वाज एन बेसिक प्लॉट ये था कि एक जेलर जो है 3 क्रिमिनल्स को लेके एक मिशन पे जाता है और एक विलन को पकड़ता है, उनको प्लान करता है. इसी प्लांटिंग ए क्रिमिनल अगेंस्ट ए क्रिमिनल इट्स वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लॉट.
So when I was writing it, then I thought ki I had written a character of Mr. Dilip Kumar that who's a very patriotic person by himself, and his wife writes a song, Har Karam Apna Karenge Watan Tere Liye. And he's very inspired by his wife's thought. And he is a person who loves his prisoners, who takes care of his prisoners. He does his duty. And when he looks at his flag, his eyes glitter. Genuine feelings. So when I was in the process of writing the script, then I thought that when he employs these three criminals who are now going to be hanged. So it was Mr. Dilip Kumar's characters who brought them and infused his feeling into them. And that is how the whole picture became on a different platform of that these three criminals who are hardcore criminal, who could never think of their country or India. In the end, they start shedding their tears for their country. And they become more patriotic than a normal person over there because they realize the way his motivator, his mentor, Mr. Dilip Kumar, his teacher, is so genuine that where are we going? So it is always the leader who infuse this kind of school of thought or feeling for your country, for your family, or for anything there. So करते 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 वो फिल्म जो है वो एक पेट्रियोटिक रूप लेने लग गई because the characters I had written. And I remember that I went to Lakshmikant Perelal and basically normally I write in my script जो गाने का मुखड़ा होता है वो मैं लिख देता हूँ साथ में. फिर उसके बाद आनंद बख्शी जी कभी चेंज करते थे कभी नहीं करते थे ऐसा. तो मुझे याद है कि मैं स्क्रिप्ट का एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिख के आया तो मैंने लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी की वहाँ गया म्यूज़िक रूम में तो किसी और की सेटिंग चल रही थी. इट्स इंटरेस्टिंग टू टेल स्टोरीज. तो किसी और की सेटिंग चल रही थी तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं 5 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, मुझे वापस चला जाऊँगा. तो उन्होंने अपनी सेटिंग को थोड़ा ब्रेक दिया और मुझे बुलाया. तो मैंने कहा कि सर मैं भी स्क्रिप्ट लिख के आया हूँ लेकिन एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप इसको लिख लीजिए और कभी मूड आएगा तो आप इसकी ट्यून बनाइएगा. और मैंने वो लाइन लिख के दी उनको, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए. ये मैं आपको अभी सच्ची बात बताता हूँ. और कह के मैं चला आया बाहर आके एक प्रोड्यूसर था, मैं उससे बात करने लगा. 5 मिनट के बाद फिर मुझे एक फ़ोन आया, निश्चय कॉल आया, लक्ष्मीकांत जी ने बुलाया, अपने बाजे पे बैठे थे. बोले सुभाष जी सुनिए, मैंने आपकी लाइन पढ़ी है, मैं इससे बहुत प्रेरित हुआ, इट्स ए ब्यूटीफुल लाइन, जस्ट लिसन. और उन्होंने गाना शुरू किया, हर कर्म अपना करेंगे. अब आप सोचिए कि वो गाना उधर बन गया क्योंकि कोई टेक्निक नहीं थी. एक फील था, मैंने लिखा, एक फील था, मैंने उनको दिया. एक फील है उनने बाजे पे हाथ रखा, एक फील है आनंद बख्शी साहब ने लिखा, एक फील था एक्टर्स ने गाया. और वो जो फील है जेन्युइन फील, वो ट्रैवल होते होते सभी आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस के द्वारा पहुँचते पहुँचते वो फिल्म ने अपना ही एक रूप ले लिया और उसका थीम पीस भी वो ही बन गया. और मुझे आज खुशी है कि जब आप ठीक सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं तो ऑडियंस तक पहुंचती है और वो गीत हो या फिल्म हो, उन लोगों को बरसों याद रहती है, जैसे आज भी आप याद हैं आपको. तो आई थिंक ये जो फिल्म मेकर्स हैं हम लोग, जब तक हम सिंसियरली नहीं उस चीज़ में बिलीव करते और सोचते हैं उस फीलिंग को, वो ऑडियंस में नहीं पहुंच पाती. अगर हम सोचते हैं तो पहुंच पाएंगे. क्या मैंने अपने सीन में या गाने में आंसू बहाए शॉट लेते हुए, शूटिंग करते हुए, लिखते हुए? तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे. नहीं बहाए हैं और बॉक्स ऑफिस सोचा है तो बॉक्स ऑफिस में कुछ मिल सकता है लेकिन वो लंबा नहीं, वो दिल नहीं जीत सकता लोगों का. तो दिल से दिल का एक नाता होता है जो फिल्म मेकर को ध्यान रखना पड़ता है. थैंक यू. Absolutely. Thank you so much. Such anecdotes of wisdom out there. As Mr. Subhash Ghai ji was talking so fondly about the movie Karma, I'd like to ask the question to Jagu Dada. Jagu Dada ji, starring in that wonderful and iconic film, years have passed, but whenever someone watches that film, it still stirs the emotions right there. And the cinema has evolved over the years.
We'd just like to know, when you were shooting that film, any particular incident you'd like to highlight, and how has the journey been so far from that film? Because that was, I believe, one of your initial in the career, one of the iconic films. And how was it to be starred in it, and your expression of gratitude and how you felt, Jagu Dada, from that film to now? स्टेज पर मंच पर उपस्थित सभी गुणीजन को मेरा सादर प्रणाम। दिव्या जी, बॉस, सर, बाकी बड़ू, आप लोग इतने सब आए ले बैठ के, बोलने को ज़्यादा आता नहीं, लिख के देंगे तो बोलूँगा। दिल में सारी बातें हैं, सिंसेरिटी लेवल अपना बराबर है, संभालने वाला अगर कोई मिल गया तो बहुत होता है। एक पत्थर को उठा के सितारा बना दिया इन्होंने, जो मैं ये साउथ बॉम्बे में रहता था, वो हकीकत है, इसमें कोई बात ही नहीं है। और शोमैन बोलते तो वाकई है, ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई है जो हम भी देखते थे, कालीचरण से लेकर विश्वनाथ, ताल, क्रोध, सब देखे दादा। तो बॉस के पिक्चर में आना, यहाँ तक पहुँच के यहाँ बैठना इतने नेशनल फिल्म्स डिवीज़न में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है बड़ू। और आज मौका भी मिल गया कि मैं यहाँ सामने आया करता था, पेट्रोल रोड अपना एरिया था, यहाँ पे घूमता था हम लोग बहुत, सामने खाने को भी आता था, आए कुछ गेम में आगे। और स्कूल था बाजू में, विला थ्रीज समथिंग, मेरी धर्मपत्नी जो मेरी गर्लफ्रेंड उस वक्त थी वो यहाँ पढ़ती थी, मैं आके खड़ा रहता था। आज मौका मिला कि मैं यहाँ पर अंदर आकर, यहाँ बैठकर एक इतना पायस मोमेंट में हिस्सा ले सकूं। 75th बड़ी बात है आप सबको, और जितने भी हमारे मार्टर्स हैं, बस उनकी याद है, उनके परिवार को याद करता हूँ, उनको इज्जत देता हूँ। और कर्मा में काम करने का जो मौका आपने दिया, हीरो से कर्मा, राम लखन, खलनायक, यादें, बचा गया। अभी बाकी आगे करना है, किशन चंद रामचंद्र, रामचंद्र किशन चंद, वो भी कर लो, अभी तक पेट अंदर ही है, पकड़ के बैठा हूँ। और थोड़ा सा कलर करेक्ट कर देगा तो थोड़ा भी अच्छा लगेगा सर। आप सबको जय हिंद। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, आप सब आए हैं, आप लोग के साथ मिलकर, आपके परिवार को सबको बहुत बहुत प्यार। आप बहुत अच्छा बात करती हैं, आप करते रहें, मुझे बात करना आता नहीं है ज़्यादा, मगर इतना कहूँगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। करना दिलीप साहब मरहूम हमारे, जब वो बात करते थे तो हम लोगों को कान लगा के सुनना पड़ता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्यों मिस होया हमारा, क्योंकि सर बात करते थे दिल से और अंदर बात करते थे, बहुत आहिस्ता करते थे। तो पहले तो लाइन याद रखो, उसके बाद में इतना बाबा, इतना बड़े आदमी के सामने खड़ा रहना, हिंदी के वांदे, फिर भी कान लगा के, कान ऐसा तेज पकड़ के बैठा रहता था। मैं बोला, और उस वक्त टेप चलता था, वो था ना फिल्म, डिजी नहीं था, नागरा नहीं, वो टेप ख़त्म हो जाएगा, वो टेंशन के, एक टेप का इतना पैसा होता है, अगर मैं अपनी वजह से अगर गलती कर दूं तो दिलीप साहब फिल्म होते थे उसको, फिल्म डब्बे में आता था, ऐसा डीजी नहीं आता था। अभी क्या बिंदास मार रहे, अभी सब अभी डिजिटल हो गया। एक्फा याद है ना, कैसे 12 गिन के चुन के 12 फोटो, एक एक की जितना कम हो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। वो वहाँ से हम लोग आए, और बस इनके गाइडेंस में मैं आया। मेरे को तो जहाँ करा हम लोग पपेट है भाई, जैसा निकालेंगे काम वैसा निकालेंगे, सिंसेरिटी है, दिल है। और जैसे उन्होंने कहा कि कर्मा कहाँ से शुरू हुई कहानी, और बैंजो बजाने के लिए मुझे दिया, हालांकि बजाने आता नहीं, किसी को बोलना नहीं, मगर फील था, टोटल फील से काम किया, दिल से काम किया, इसलिए आप लोग के सामने खड़ा हूँ और आप लोग सुन रहे मेरे को। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल सर फॉर यू टू मेक मी अ हीरो and whatever I am now. Thank you for calling me, lady. We're proud of you, sir, ma'am. बड़ू, आप लोग सबके परिवार को मेरा बहुत बहुत प्यार, लव यू लव यू लव यू, बस प्यार मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं, टेंशन लेने का नहीं, देने का नहीं। Well, let's give him a huge round of applause, and let's show him our love through our, volume of the applause, and let's continue applauding him. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, जैसा कि आप जानते हैं, sports and patriotism getting displayed in our Indian cinema, they've created iconic
works. But one question I'd like to now ask to Rakeysh Omprakash Mehra ji, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, the way a sports person gets displayed on the screen and जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं, and when they win, you know, do you feel that what is shown on the screen, does it somewhere have an impact on how India is performing at, let's say, all the international competitions? Like Commonwealth game, aap jaise ki, you know, it's happening right now. India has won a lot of medals and it's an honor, you know, when our sports people are representing our country. But aapko, sir, lagta hai ki, is there a kind of a synergy? What is getting displayed? And that helps us, even the sports people, to get that kind of recognition and also encourage and enhance their performance currently at the international level. नमस्कार सर, दादा सर। नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे को लगता है कि जो रियल लाइफ में हो रहा है उससे प्रेरित होकर हम लोग फिल्में बनाते हैं। तो मेरे को ऐसा एक मौका भाग मिल्खा भाग के साथ मिला था, तो उसमें कहानी मैं पार्टीशन की कहना चाह रहा था कि इतने साल हो गए, एक मुल्क के दो टुकड़े हो गए, फिर 2 से 3 हो गए, और फिर भी जो हमारे अंदर की नफ़रत है वो नहीं मिटी है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, बांट लिया मुल्क, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इसमें मुझे मिल्खा सिंह की कहानी मिली थी। एक 12 साल का बच्चा जिसने अपनी आँखों के आगे मतलब दंगे देखे, उसमें 1947 के जो हमारा विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसमें उसके माता पिता जाते रहे, उसके भाई बहन, कज़न ब्रदर, पूरा 2000 का गांव पूरा साफ़ हो गया। और यही नहीं, वहाँ नहीं, हर हम बोलते हैं दोनों तरफ, बट कुछ था, एक पागलपन का माहौल था, हम जानते हैं उसके बारे में, हम सब ने पढ़ा है, मैं आगे क्या बताऊं। तो फिल्म में उसके बारे में बनाना चाह रहा था। और वो आके एक रेफ्यूजी कैंप में रहता है, उसको उसकी वहाँ उनकी बहन मिलती है जो दिव्या जी ने पार्ट प्ले किया था। उसके मतलब खाने के लिए खाना नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पैरों में जूतों का तो सवाल ही नहीं है। फिर वो जाके इंडिया में रिकॉर्ड कैसे बनाता है, जो 60 साल तक रहता है, एशिया में डबल मेडल कैसे जीतता है, गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम में जाके गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड कैसे बनाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाता है, वो ओलंपिक्स तक कैसे पहुंचता है, ये बात क्या है, चक्कर क्या है। और एक तो ये था, और दूसरा यही था कि मतलब देश आज़ाद तो हो गया और करोड़ों ने आज़ादी का जश्न मनाया, आज हम 75वां मना रहे हैं, बट करोड़ों ने भुगता भी था आज़ादी को, जो पार्टीशन थी, बहुत बड़ा प्राइस दिया था ये। तो वो उससे जो नफ़रत पैदा हुई थी, मैं उसको एड्रेस करना चाह रहा था। तो हमारी पहली स्क्रीनिंग थी, और ऐसे ही एक थिएटर में दिल्ली में, वो मिल्खा सर के साथ, उनको एक तरफ फरहान बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था, हम 3 ही थे थिएटर में। आप दिव्या जी उस टाइम आपका वो प्ले चल रहा था, आप टूर पे थी, मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारी अमृता, एंड यू कुडंट जॉइन अस। एंड फिल्म चली, अब देखी मिल्खा जी ने, अब ये मैं बोल नहीं सकता कि आप उनको फिल्म कैसी लगी, आप अपने आप को देख रहे हो तो वो फीलिंग अलग है, एक दूसरे की कहानी देखते हो अलग होती है। चाहे वो फिल्म ख़त्म हुई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बच्चे, वो मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए जितनी नफ़रत थी ना, आज वो भी ख़त्म हो गई। तो मेरा फिल्म बनाने का मकसद ही वो था। और जब खुद उनके मुंह से सुना ऐसा, जिन्होंने इतना कुछ खोया था खुद, एक होता है कि आप ऐसे ही नारेबाजी सुन के, प्रोपेगेंडा सुन के अपने दिल में नफ़रत पैदा कर लेते, एक होता है आप बीती।
उनकी जब आप बीती थी, वो नफ़रत जब प्यार में बदली तो मुझे लगा कि ये है, सिनेमा में दम है। और हाँ, अगर वो नहीं होते तो उनसे प्रेरित होके हमने फिल्म बनाई है, तो हमेशा लाइफ आपको प्रेरित करती है, ना कि उल्टा। हाँ, फिर उसके बाद कुछ आपके गाने वाने हिट हो जाते हैं तो वो चल जाते हैं आईपीएल वगैरह में, एशियन गेम्स में, इधर उधर, तो वो ठीक है। वो बट बड़ी बात दूसरी है कि पीटी उषा से हम प्रेरित होंगे तो उस पर फिल्म बनेगी, मिल्खा सिंह से प्रेरित होंगे तो उन पे फिल्म बनेगी, धोनी से प्रेरित हुए तो धोनी पे फिल्म बनी। तो ऐसा हम इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, या खास मैं तो कर नहीं सकता, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। Thank you so much. Come on, ladies and gentlemen, a huge, huge round of applause. You know, I would now like to go and ask Mr. Bhakarji a question out to you. You know, the government of India is doing beautiful campaigns to popularize the sentiment of patriotism. जैसे कि अब जो campaign है हर घर तिरंगा, I remember driving down today and at every nook and corner आपको एक flag दिखा, and it felt, you know, it invoked that great sentiment of patriotism, and of course Amrit Mahotsav. What do you feel that the Indian cinema can do further to make the youth in particular, because they are, you know, somebody who are going to be our future leaders. How do you feel that the Indian cinema, what can they do so that the youth feels the passion and fire for the country and gets involved in nation building? Because I think that's a very important topic to discuss. Mr. Bhakarji? Yeah, I welcome all the dignitaries on the stage and all the audience. Your question is very relevant. You know, I personally feel cinema stimulates the kind of emotions, the perspectives, the skills and the understandings of the viewers. It's a very impactful medium. So the youth also gets an influence. You know, if you go by the cinema, if you talk about the country's freedom, I still remember one song, Dur Hato Ye Duniya Walo, Hindustan Hamara. I think it was in some 40s, early 40s, which played a crucial role in, you know, in motivating the people, and even arrest warrant was issued against the composers and who wrote this song. So I'm just mentioning because how it influenced the feelings of the youth, how it motivates them, how inspires them to be a part of, you know, country's freedom movement. And